Hi, good evening everyone. This is Shefali Singla, and in this session we will be discussing the concepts of data structures and algorithms through questions. तो आज वाले सेशन में हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स लर्न करेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। बिफोर दिस आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस हम मास्टर क्लास में करते थे। अब दोनों जगह पे हम कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस दोनों कर रहे हैं। So for every question, you will be having like 30 seconds to 1 minute to go through the question, try it, and then I'll be discussing the detailed solution for the same. And उससे क्या होगा कि आपको question का solution भी मिल जाएगा and concepts भी clear हो जाएंगे. And moreover, ये जो majority questions है, these are the previous year questions. तो इससे आपके previous year questions की भी practice हो जाएगी through this series. So those who are new on this channel, so guys, we have Super Coaching UGC NET JRF by Testbook channel, जिस पे daily 6:30 class होती है, and on the top right you can see here I have provided the link for the Telegram group, so you can join this, and if you have any doubts or concerns you can ask. So let's quick start with the first question. So this is based on the recurrence relation. So we are given with the recurrence relation and we are supposed to solve this recurrence relation. So just try to attempt this recurrence relation and see if you are able to get the answer. So the way of writing this is, so as you are given that t of n is equal to 2t square root of n plus log n. So what I'll do is I'll substitute n as something like, assume n as 2 raised to power k, because अभी तक आपके पास जो रेफरेंस रिलेशन है इस पे आप डायरेक्टली मास्टर्स थ्योरम नहीं लगा सकते, तो मैं इसमें क्या एज्यूम कर रही हूँ कि n is in the form of 2 raised to power k. When I'll be substituting this value here, I'll be getting 2 raised to power k is equal to 2t n raised to power k, uh, 2 raised to power k it's 2 raised to power k, and root means power is 1 by 2, so I'll be writing this as k by 2 plus log n. अब ये भी n की फॉर्म में है, बाकी सब आपके पास k की फॉर्म में आ रहे हैं. So let's see what is the relation between n and k. So if I want to find out the value of k, I'll be taking log on both the sides. Take log. Now it comes out to be log n is equal to k log 2, and if it's base 2, अगर आप यहाँ पे base 2 ले रहे हो तो ये value आपके पास 1 हो जाएगी. So we can say that k is equal to log n. तो यहाँ पे आपको log n दिया हुआ है, तो यानी कि I can write here k. Now assume that this term is nothing but this is written as t of 2 is written as s, and what is the part? It is k. This is equal to 2 t of 2 को हम क्या लिख रहे हैं s, पावर क्या है k by 2, so it comes out to be k by 2 plus k. अब देखिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस रिलेशन को कन्वर्ट कर दिया. नाउ कैन यू अप्लाई मास्टर्स थ्योरम? डेफिनेटली yes. So if you have a look over the format, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है. हमने ये बोला था मास्टर्स थ्योरम में a should be greater than equal to 1 and b should be greater than 1. In this case, the value of A is 2, B की value भी 2 है, दोनों conditions satisfy हो रही हैं. That means we can apply Master's theorem. So now we are using Master's theorem. I guess that is the easiest part. मैंने बहुत easy तरीके में आपको explain किए कि Master's theorem किस तरीके से use करते हैं. So just let me know after applying the Master's theorem what answer you guys are getting. Main part यहाँ पे सिर्फ conversion तक था, वो मैंने कर दिया है. तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करती हूँ यूजिंग मास्टर थ्योरम और एनी सब रेकरेंस रिलेशन सॉल्यूशन,
किसी भी तरीके से कर सकते हो. You can use the substitution method, Master's theorem, but obviously Master's theorem quickly response देता है, so we'll go with that. So it's k raised to power log a with the base b. So a और b दोनों की वैल्यू आपके पास क्या है? It is 2. So this comes out to be k. अगर आप फंक्शन के साथ कंपेयर करते हो, both the values are same. अगर सेम है, दिस इज अ केस ऑफ टाई, तो हम ये बोल सकते हैं कि s ऑफ k कम्स आउट टू बी थीटा ऑफ k, जो भी आपके पास फंक्शन है, इनटू log k. नाउ द गिवन फंक्शन वाज इन द फॉर्म ऑफ t ऑफ n. यहाँ पे t ऑफ n की फॉर्म में था, n की फॉर्म में था, तो हमें ये k हटाना पड़ेगा. k इज नथिंग बट दैट इज log n. तो जहां पे आपके पास k है, वहां पे मैं log n सब्सटीट्यूट कर दूंगी. सो दिस कम्स आउट टू बी थीटा ऑफ log n log of k is log n. So it comes out to be theta of n log of log n. That is nothing but it's option D. So correct answer for this question is option D. तो इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. मेजॉरिटी टाइम स्टूडेंट्स आर स्टक लाइक कि इसको कैसे सॉल्व करना है. तो इजीएस्ट वे इज आप ये एजम्पशन ले लो एंड उसके बाद यू विल गेट अ रेकरेंसलेशन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ मास्टर्स थ्योरम फॉर्मेट. मास्टर्स थ्योरम वाला फॉर्मेट सेटिस्फाई हो जाएगा. सॉल्व इट यूजिंग द मास्टर्स थ्योरम. दिस इज द इजीएस्ट वे टू हैंडल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Make sense? Please write your comments in the chat section. Now, here we are given with a graph and we are supposed to find out the number of spanning trees. See, दो तरीके हैं. One is using the Kirchhoff's theorem and other one is manual method. अगर आपके पास 3 या 4 up to 4 nodes given है, then you can go with the manual method. But if more than that is given to you, I won't suggest you to go with the manual method. तो उस केस में बेटा आपके लिए better क्या है? Use the Kirchhoff's theorem. So whenever you have to find out the spanning tree, so there are two methods. One is the manual method and other one is Kirchhoff's theorem, जो आपने mathematics में पढ़ा होगा. Kirchhoff's theorem. So using Kirchhoff's theorem also, you can find out the number of spanning trees. Here you need to find the determinant of the matrix. जितनी भी आपके पास nodes है, you will be creating the adjacency matrix और उसके बाद आप determinant find करोगे and whatever will be the result, that will be giving you the number of spanning trees. So this is how Kirchhoff's theorem works. Okay, so what we'll do is, since we just have 4 nodes, so we'll solve it using the manual method. For reference, let me provide here the numbers 1, 2, 3, 4. Spanning tree means आपके पास it's a connected graph which is having n minus 1 edges, where n is representing the number of nodes in a graph. यहाँ पे graph में मेरे पास 4 nodes है, इसका मतलब spanning tree में आपके पास 3 edges आएंगी. Using any 3 edges, just see what can be drawn. So it's like 1, एक पर्टिकुलर पैटर्न उठा लीजिए. मैं 1 2 3 को इसी तरीके से कनेक्टेड रख रही हूँ. 4 को कनेक्ट करने के लिए हाउ मेनी वेज आर देयर? देयर आर 3 ways. That is, I can connect it with 4 like this. Then we have 1 2 3 and 4. Now I'll be connecting it with 2. Then 1 2 3 and 4. Now I'm connecting it with 3. 3 तो ये बन गए. Apart from that, 4 के साथ तीनों connected है. So I can take it as 4, 1, 2, 3. So it's connected like this. Then we can connect it like 1, 2, 1, 2, 3. It's connected with 4 and connected with 2. 1, 2, 3,
आप समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? सो इस जब आप मैनुअली करते हो देन देयर शुड बी सम पैटर्न इन योर माइंड. जैसे मैंने क्या किया, जो फर्स्ट थ्री केसेस है मैंने 1 2 3 को कनेक्टेड रखा एंड देन 4 को कनेक्ट करने के लिए देयर आर 3 डिफरेंट options. Now 4 is connected with 1 2 3, so this way you can take. Now we have 1 2 3 and 4. I can connect it like this: 1 2 3 4. Now 2 and 3 are connected, and 2 and 4 is connected, 4 and 1 is connected. So these are the possibilities. So 1 2 3 हमने ये सारे ले लिए, 4 के साथ सारे connections कर दिए, then 1 2 3 के साथ possibility ले ली. So in this case we are getting 8 minimum spanning trees, or 8 spanning trees. Minimum नहीं बोल सकते because here the edge weights are not given to you. This is using the manual approach, but definitely you can use the Kirchhoff's theorem as well. But before using the Kirchhoff's theorem, you should be comfortable with the finding the determinant of the matrix. तभी आप find कर पाओगे. So for this, you should revise the concepts of matrices first. Okay? Anyone having any doubt till this point? तो मैंने ये जो बनाया है, this is using the manual method. Correct answer for this question is it's option 8. Let's move on to the next question. This is based on the asymptotic notations. Just read it. कुछ asymptotic notations दी हुई हैं और आपसे पूछा गया है the running time of an algorithm is big O of G of n if and only if. Big O notation is used to represent the worst case. Big O किस लिए हम use करते हैं? In order to represent the upper bound. ज़्यादा से ज़्यादा कितना time लगेगा? This represents the upper bound. That means it is giving you the worst case. Here we have worst case. So it's the worst case running time is order of G of n, yes, and best case running time, best case time complexity we represent with the omega of G of n. So this can be the answer. Its worst case running time is यहाँ पे best case दे रहे हैं. Worst case cannot be represented with big omega and best case cannot be represented with big O notation. So B, option B cannot be the answer. Big O of G of n is equal to omega of G of n. So if the worst case is equal to the best case, that represents the average case. क्या represent करता है? It represents the average case, but हमें क्या represent करना है? We have to represent the worst case time complexity. So C cannot be the answer. Big O of G of n intersection small omega of G of n is non-empty set. It has nothing to define with the big O of G of n, or you can say big O notation. So even option D is also incorrect. Which is the correct one? Choose the correct answer. That means आपको बताने कि इनमें से कौन सा सही है. So it's only option A. It's A only. Correct answer for this question is it's option 1. Next. Again, this is based on solving the recurrence relation. You are given with the recurrence relation. Just see how you can solve it. Although you can solve it using in either of the method, you can go with substitution method, Master's theorem or recursive tree method. But मैंने आपको एक सेशन लिया था मैंने YouTube पे जिसमें मैंने तीनों methods discuss किए थे. I gave you the introduction to all the 3 methods. Along with that, I also discussed कि कहाँ पे कौन सा method use करने. So can you tell me that to solve the given recurrence relation, it's T of n is equal to 8T of n by 2 plus Cn. आप कौन सा method prefer करोगे? Will you be using substitution method, recursive tree method or Master's theorem? Comment section में लिख कर बताइए which method will you be using? Waiting for your response.
Please write in the comment section that which method will you be using to solve the recurrence relation. सबसे पहले आपके पास जब भी equal distribution होती है सब problems में, then we either go for the substitution method or the Master's theorem. Master's theorem को हम first preference देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा calculations नहीं है, बहुत ज़्यादा time नहीं लेता है, तो but we need to identify कि जो आपके पास recurrence relation है क्या ये desired format में है. In this case, can you tell me that what is the value of A? If you compare it with T of n is equal to A T n by B plus F of n. So what is A here? A is 8. B is 2. F of n, this is n. So when you know the value of A and B, A should be greater than equal to 1, B should be strictly greater than 1, both the conditions are satisfied. So I'm going to find out n raised to power log A with the base B. N raised to power log 8 with the base 2. 8 is nothing but 2 raised to power 3 with the base 2. तो ये जो आपके पास पावर है ये front में आ जाएगी, so it comes out to be n cube. Now if you compare f of n is given as n and log n raised to power log a is n cube, तो दोनों में से which function is greater? Obviously cubic function is greater, then directly we'll say that T of n is equal to theta of n cube. Check for the options. It is going to return cubic time complexity, that is nothing but option 4. So 4 is the right answer for this question. कोई ऐसा है जिसको मास्टर्स थ्योरम क्लियर नहीं है? बच्चे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सिंपली ए और बी की वैल्यू चेक करो, ए एंड बी की कंडीशंस देखो. मास्टर्स थ्योरम बोलता है ए कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, ए इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स. सब प्रॉब्लम कम से कम एक तो होगी, बट डेफिनेटली जो भी आपके पास सब प्रॉब्लम्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड रिड्यूस. द थिंग इज here function t of n is making a call to function t of n. Function name is same, number of parameters is 1, number of parameters are also 1, but parameter value अगर b की value 1 हो जाएगी तो t of n will be equal to a t of n. तो उस केस में क्या होगा, आपके पास function खुद को कॉल कर रहे हैं, number will be same, number of parameters will be same, but parameter value अगर change नहीं होगी तो आप कभी भी termination condition पे नहीं पहुंचोगे. So that's not a valid recursive call. So that is why the constraint is b should be greater than 1 so that आपके पास सब problem में number of elements change हो. So this is the reason behind this. I hope that it's clear to everyone. Now let's find out in a binary max heap which contains n numbers, जिसमें आपके पास n numbers है, how much time is required to find out the smallest element? In a binary max heap that is containing n numbers means how many levels will be having log n levels, क्योंकि जब हम binary tree बनाते हैं आपके पास complete binary tree को हम heapify property देते हैं. So this means that the number of levels will be log n in the almost complete binary tree. Now if it's the max heap, अगर आपके पास max heap दिया हुआ है, max heap की property क्या होती है? Max heap property says that the parent should be greatest than its children. So this means that if we are going to construct the max heap tree, then whatever is the maximum element that will be available at the root. Maximum element. So अगर मैं first deletion operation perform करूंगी, this will give me the maximum element. So first maximum के लिए how much time is it taking? Log n. स्मॉलेस्ट एलिमेंट कब मिलेगा? जब सारे एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे. दैट मीन्स वन बाय वन आई हैव टू डिलीट ऑल द एलिमेंट्स. एक एक करके मैं सारे एलिमेंट्स डिलीट करूंगी. एक एलिमेंट को इंसर्ट या डिलीट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज log n in case of maxi.
तो फर्स्ट एलिमेंट डिलीट किया, मैक्सिमम एलिमेंट मिला, नेक्स्ट मैक्सिमम, एंड सो ऑन. दिस वे I'll be adding log n for n times. So this will give me n log n. Okay, if I'll be performing the deletion operation one after the another, so I'll be getting smallest element means जो भी आपके पास last element आएगा, that will be the smallest element. But I want to improve this complexity. N log n से तो better ये है कि अगर even if you have the unsorted array of elements, if you scan the whole array, जिस तरीके से one scan is required to find the maximum element, similarly one scan is required to find the minimum element. One scan. If we have n elements, तो एक scan कितना time लेगा? It will be taking order of n. First element को min मान लीजिए, then compare the next element is greater than min or not, accordingly updated. We have discussed this. So one scan is required to find the minimum element. So instead of deleting the elements one after the another from the max heap tree, what we'll do is we'll perform one scan and we'll find the minimum element in the linear time complexity. So correct answer for this question is 1. Clear? Haven't got any confirmation yet. जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चंस किए हैं, is this clear for everyone? Okay, let's go to the next question. This is based on Radix sort. So here it is saying that the maximum number of comparisons which are needed to sort 9 elements, 9 items. आपके पास 9 items है using the Radix sort, and this is nothing but this is a 5-digit octal number. So if we have 5-digit octal number, this means that how many different digits will be there? There will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So in short, you will be having 7 buckets. So if it's the octal number, that means there will be 7 buckets available. अब क्या करना है? Each number is having 5 digits. So how many times you will be performing, how many times will you be running the loop? एक एक digit आप एक एक digit करके check करना start करते हो. You start from the unit place. So we have 8 buckets. We have to execute it for 5 times because in each number there are 5 digits and we are given with 9 items. This means that for 9 items, you will check the first digit, that is the unit digit. So total possible combinations कितने बनेंगे? It is complexity is nothing but it is order of D number of digits. कितने digits हैं? 5. कितने numbers हैं? कितने numbers के लिए check करने हैं? 9 numbers के लिए. And कितनी buckets बन रही हैं आपके पास? That depends on the base. So D is representing here the number of digits. N is representing the number of elements. And B is depending on the base. Base के basis पे आपने क्या ली हैं? Buckets. Now, number of digits are 5. So I'll say here it comes out to be 5. And number of elements are 9. And base is 8. So this comes out to be 9 into 8 is 72 into 5 is 0, 3, 6. So correct answer for this question is option 3, that is 360. Easy, simple, good to go. Next question. Let G be a directed graph whose vertex set is the set of numbers from 1 to 100. आपके पास एक directed graph है, directions are there, और जो vertices हैं, those are representing the numbers 1 to 100. There is an edge from a vertex I to vertex J. Vertex कोई दो vertices के बीच में edge कब exist करेगी?
if I is equal to j plus 1, यानी कि 1 से लेकर 2 के बीच में एज एग्जिस्ट कर सकती है, बिकॉज I is equal to, if this is I is 1, then j is j plus 1. Then this is j is equal to I plus 1. I plus 1. एंड दूसरा हमने क्या बोला है, when और j is equal to 3i, यानी कि 1 से 2 पे एज जा सकती है, 2 से 3 पे जा सकती है, और it can go from 2 into 3 is 6, it can go to 6. अब आपको ये बताना है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ पाथ फाइंड करना है फ्रॉम वर्टेक्स 1 to 100. So how many edges will be there? The minimum number of edges will be there in a path from vertex 1 to 100. अब 1 के बाद, if you start from 1 के बाद 2 पे भी जा सकते हैं, 1 के बाद सीधा 3 पे भी जा सकते हैं. Let us assume we are going to 3, क्योंकि हमें कम से कम edges चाहिए, so obviously this will give you minimum number of edges, क्योंकि आप multiply by 3 कर रहे हो. 3 into 3 is 9. 9 into 3 is 27. 27 into 3 is 81. 81 के बाद आप 3 पे नहीं जा सकते, into 3 नहीं कर सकते, because it is crossing 100. अब इसके बाद आप एक एक करके verses लोगे. 82, then we'll be having 83, and like this 84, 85. So this way you will be going till 100. तो कितनी एजेस होंगी? 81 से लेकर 100 तक 20 ये हो गई, 21, 22, 23, 24. So approximately 24 edges will be there in this path if you follow this. If I'll start from 100, 100 से 100 को डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू रीच टू 1. तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नाउ विल डिवाइडेड बाय 3. क्या 100 को डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं? विल यू बी गेटिंग द इंटीजर? ऑब्वियसली नॉट. सो व्हाट आई विल डू इज 100 से मैं 99 पे जाऊंगी. अब 99 डिवाइडेड बाय 3 इज पॉसिबल, सो आई विल बी रीचिंग टू 33. 33 divided by 3 gives you 11. 11 divided by 3 is not possible. आपके पास कुछ रिमाइंडर आएगा, तो मैं 10 पे गई. 10 के बाद I'm going to 9. 9 divided by 3 is possible. So now 9 divided by 3 is 3. 3 divided by 3 is 1. तो आप 100 से 1 पे पहुंच गए with the number of edges. This is 1, this is 2, this is 3, 4, 5, 6 and 7. So this means that जो आपके पास shortest path बनेगा, minimum number of edges will be 7. In the first case, if you start from 1 and reaching till 100, it's taking more than 20 edges, so which is not correct, since we have to return the minimum one. It is 23. Is this clear? So these are the possibilities. और possibility क्या बन सकती थी? 99 कब आएगा? When you are going from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and like that. If we have n verses, तो n minus 1 edges will be there. तो यहाँ पे हर बार क्या कर रहे हैं? It is using the relation that is incremented by 1, that is j is equal to I plus 1. So तब जाके आपके पास 99 आएगा, but we have to return the minimum number of edges. So I'll take here j is equal to I plus 1. Clear? So undoubtedly answer for this question is 7. Next question is again based on solving the recurrence relation. We have already solved 2 questions using the recurrence relation. So I want you to write the answer for this one in the chat section, or at least write that which method are you going to use. +1. Which method are you going to use for solving this one?
Anyone? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3m by 4. I can write this as T of m is equal to T m by 4 by 3 plus 1. If you notice here, the value of a is 1, which should be greater than equal to 1 according to Master's theorem. So condition is satisfied. B is given as 4 by 3, which should be greater than, B should be greater than 1. So yes, it is greater than 1. So now let us find n raised to power log a with the base b. N raised to power log a is 1, 4 by 3. 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? Anything raised to power 0 is 1. So this comes out to be n log 4 by 3 raised to power 0 with the base 4 by 3. So this comes out to be n raised to power 0, which is equal to 1. Now you can see here it is equal to f of n. तो इसका मतलब आपके पास टाई हो गया. तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? T of n is equal to theta of f of n, ऐसे रिटर्न करते हैं, into log n. If it is m, then let's take here m. So f of n is nothing but that is 1 here, and log m कितना आ रहा है आपके पास? That is log m. So this comes out to be theta of log m. तो सिंपली आप इसको सीधा सीधा मास्टर थ्योरम से सॉल्व कर सकते थे. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1. सो आज वाले ही सेशन में हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया ऑन द मास्टर्स थ्योरम. आई होप दैट यू ऑल आर कंफर्टेबल विद मास्टर्स थ्योरम. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया था. जस्ट गिव इट अ ट्राई. स्क्वायर रूट वाला स्टार्टिंग हमने जो क्वेश्चन से की थी, फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज बेस्ड ऑन द स्क्वायर रूट. सो इन दिस केस आल्सो वी हैव अ स्क्वायर रूट. जस्ट सी इफ यू कैन गेट द आंसर. So we are given with the recurrence relation T of n is equal to 4t root n plus log square n. Log square n. Now क्या तरीका बताया है? अगर आपके पास रूट n है, कुछ इस फॉर्मेट में आ रहा है, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n इन लाइक 2 raised to power something. आप कोई भी वेरिएबल ले लो, m k, it's completely your choice. So on the basis of this, obviously हमें n के साथ m का रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल रिलेशन गिवन है दैट इज विद द वेरिएबल n. तो फाइनल आंसर भी आपका n की फॉर्म में आएगा. But we are converting this recurrence relation in the form of the variable m. So m will be, अगर आप दोनों साइड पे log लेते हो, m will be log n. After taking the log, so we can say that m is equal to log n. So let me substitute here. N is 2 raised to power m is equal to 4t. Root n is nothing but n raised to power 1 by 2. N को मैं लिख रही हूँ 2 raised to power m and by 2 plus log n का whole square. So this becomes m square. Now again convert it. So this is gonna be s of m is equal to 4 s m by 2 plus m square. Now can we apply Master's theorem? क्या अब हम इस पे Master's theorem apply कर सकते हैं? Definitely yes. So apply Master's theorem. Now you can use Master's theorem. So according to this, a is equal to 4 and b is equal to 2, when I'll be finding m raised to power log a with the base b, that comes out to be m raised to power log 4 with the base 2. 4 is nothing but 2 raised to power 2, तो आपके पास ये क्या आ गया? m square, which is equal to f of n. आपके पास tie बन गया. So here we are getting a tie
जब टाई बन गया तो s of m will be f of n. F of n is nothing but m square, or in order to break the tie we need to take here log m. Now we are getting the result in the form of m. Let's convert it to n. T of n, theta of m square is nothing but that is log n square, log n square, log of m. M is log n. So it's log square n, log of log n, log square n, log of log n. So correct answer for this question is option 3. आई गेस आज वाले सेशन में मेजॉरिटी क्वेश्चंस रेकरेंसलेशन पे आए हैं, सो विच इज एक्चुअली गुड. तो आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मेजॉरिटी क्वेश्चंस ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके. सो मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो थे या तो डायरेक्टली उन पे मास्टर्स थ्योरम अप्लाई हो रहा था, और यू कैन, अगर आपके पास कुछ स्क्वायर रूट की फॉर्म में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो इनटू द रिक्वायर्ड फॉर्मेट एंड देन यू कैन यूज द मास्टर्स थ्योरम. क्लियर? ऑलराइट. Now, this is based on one of the application of the greedy technique, that is minimum cost spanning tree. So here we are supposed to return the weight of a minimum spanning tree in a graph G, which is calculated using Kruskal's algorithm. So yesterday also we had discussed Kruskal's algorithm. Kruskal's algorithm क्या बोलते हैं? Always delete the minimum edge weight. और आप उस edge को add करोगे provided it should not be forming a cycle. करेक्ट, क्योंकि स्पैनिंग ट्री मींस साइकिल इज नॉट पॉसिबल. ट्री में आपके पास साइकिल नहीं हो सकता, ट्री कभी भी आपके पास डिसकनेक्टेड नहीं हो सकता. सो वी हैव टू ऐड द एजेस इन सच अ वे दैट वी आर गेटिंग अ कनेक्टेड ट्री. सो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी. मैं एज्यूम कर रही हूं ताकि लिखना इजी हो जाए. सी, डी एंड ई. किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री मींस जितने भी आपके पास ग्राफ में वर्सेस हैं स्पैनिंग ट्री में, वो सारे के सारे वर्सेस आएंगे. बी, सी, डी एंड ई सारे वर्सेस आएंगे. एजेस कितने आएंगे? क्योंकि ये ट्री है, कनेक्टेड होना चाहिए विद n-1 एजेस, where n is representing the number of verses, it is representing the number of nodes or verses. यहाँ पे आपके पास 5 nodes हैं, 5 verses हैं. That means we have to use 4 edges. With the कौन सी edges आएंगी? वो जिनका minimum weight हो. So Kruskal's algorithm ये बोलते हैं आप minimum से start करो. In the middle of the algorithm you may get disconnected graph, but at the end for sure आपके पास connected आएगा. So minimum edge weight is 2 here. अगर मैं 2 को include करती हूँ, क्या यहाँ पे एज 2 को इंक्लूड करके साइकिल बनेगा? अभी तक तो कोई एज ही नहीं है, साइकिल बनने का कोई चांस ही नहीं है. सो आई टेक द एज विद द वेट 2. next minimum is, this is selected, next minimum is 3. So if I'm going to include 3, it's not forming a cycle, so we'll be taking this edge with the weight 3. This is also selected. उसके बाद नेक्स्ट एज वेट इज 4. 4 को इंक्लूड करके आपके पास साइकिल बन रहे? नो, इट्स नॉट फॉर्मिंग अ साइकिल, सो विल टेक दिस एज 4. आफ्टर दैट टेक द नेक्स्ट मिनिमम. आपके पास 4 एजेस आएंगी, 5-1, सो 4 एजेस. अभी तक वर्टेक्स ई कनेक्टेड नहीं है because we have only used 3 edges. अगर मैं 5 को इंक्लूड करती हूँ, बी और सी के बीच में एज वेट नेक्स्ट मिनिमम इज 2, 3, 4, नेक्स्ट मिनिमम इज 5. तो 5 को इंक्लूड करके डेफिनेटली आपके पास साइकिल बन रहे हैं, सो वी कैन नॉट टेक दिस एज. नेक्स्ट मिनिमम इज 6. अगर मैं 6 को इंक्लूड करती हूँ, देन डेफिनेटली इट्स नॉट फॉर्मिंग अ साइकिल, so we'll stop here. This is the minimum spanning tree. Moreover, इस केस में आपके पास unique spanning tree बनेगा because you are given with a connected graph. ग्राफ जब कनेक्टेड होगा तभी ट्री आपके पास और सब ग्राफ कनेक्टेड हो सकते हैं. कनेक्टेड ग्राफ है तो स्पैनिंग ट्री बन सकता है. कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे? इन दिस केस यू कैन नोटिस जितने भी एज वेट्स है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो वी आर गिवन विद डिस्टिंक्ट एज वेट्स. मैंने ये प्रॉपर्टीज करवाई हुई है, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन बन सकते हैं. सो डिस्टिंक्ट एज वेट्स.
जब भी आपके पास एज वेट्स डिस्टिंक्ट होते हैं, वी ऑलवेज गेट अ यूनिक मीन्स एक ही मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री बनेगा, यूनिक मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री. If more than one edge is having the same weight, और अगर आपके पास edge weights distinct नहीं है, then in that case we may get, मैं यहाँ पे term may use कर रही हूँ, उस केस में possibility है कि आपके पास minimum cost spanning tree एक से ज्यादा बन सकते हैं. It's not the case that every time you will be getting more than one spanning tree, but it may be possible. So unique minimum cost spanning tree, because the edge weights are distinct. What is the minimum cost? जो भी आपने edges select किए, just take the sum of that. Minimum cost is nothing but, that comes out to be 2 plus 3 plus 4 plus 6. 6 plus 4 is 10 plus 5 is 15. So this comes out to be 15. Correct answer for this question is option 2. So this is all about today's session. So we have discussed approximately like 7 to 8 questions, previous year questions from data structures and algorithms. So majorly जो concept cover हुआ है, that is for the recurrence relation, and almost 4 questions we have solved on the recurrence relation. Anyone having any doubt? You can try these questions as your assignment. And in the next session, I will be discussing these questions. If you guys need this PDF, you can join my Telegram group. I'll share the PDF. अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, बाद में प्रैक्टिस के लिए चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की PDF टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज नहीं मिल रहे, so you can use these PDF. So in the YouTube series, I'm covering the concepts through the questions, but we are covering the whole syllabus in detail in the live sessions in the Foundation Batch 2.0. So this is the super coaching batch. इसमें पूरा का पूरा syllabus latest pattern के according, latest syllabus के according हम लोग cover कर रहे हैं डिटेल में. Batch English है, language English use हो रही है, and complete live preparation है. Guidance sessions are also there. Apart from this, you will be getting the books and the study notes. जो books में study notes होंगे and practice questions होंगे. Apart from that, previous year questions will be solved and mock test series is also included in this batch. So this is completely all in one package. So everything will be available. Apart from this, special mentorship for the PhD admissions in the top universities is available. And if you want this, and you have some queries related to, or you want to get to know more about this batch, तो स्क्रीन के ऊपर मेरी इमेज के नीचे आप देख रहे होगे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है. यू कैन मेक अ कॉल ऑन दैट नंबर, एंड जो भी आपके क्वेश्चंस है, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, दोस विल बी हैंडल्ड. So if you want to get the subscription, then definitely we don't want to pay the full fee, so we need a promo code. So it's on the top of the screen, Shefali S. You can use this promo code. And फिर भी अगर आपके कुछ concerns है, आप Telegram group में share कर सकते हो. And in the next session, I'll see you with more set of questions from data structures and algorithms. And if I talk about the free sessions, so we are having the free sessions on 2 platforms. एक YouTube के ऊपर होता है, and other one is on the Testbook app. Testbook app is nothing but that's the master class. Testbook app. So this is nothing but this is the master class. So here we have the session time. For YouTube it is 6:30 p.m. and for master class it is 8:30 p.m. And for the super coaching we are having 2 sessions every day, which is of duration 2 hours. So this is all about this session. If you guys have any doubts, any concerns, you can ask. Otherwise, we'll end our discussion here. I think there is no doubt. And definitely, if you go through the description box, तो जितने भी important links हैं,
टेस्ट बुक ऐप से रिलेटेड, बैच से रिलेटेड, फाउंडेशन बैच 2.0, दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आप स्क्रॉल करोगे आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जस्ट एक्सेस इट. ओके. एंड इफ you feel like in session से आपको benefit हो रहे हैं, sessions अच्छे चल रहे हैं, then don't forget to like the video, subscribe the channel and hit the bell icon to get the notifications of the upcoming videos. And definitely the links are shared in the Telegram group as well, तो आप इसको join कर सकते हैं. And I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.